morning students. I hope you all are fine at your home. Now let's start for today's class. Students, today we will explain how we change tens to ones. Changing tens to ones. How many are these? Count it. There are 10 blocks in this line and 10 blocks in this line. So 10 ones means 1 tens and 20 ones means 2 tens. This is 1 ten and this is 1 ten. So 1 plus 1 is equal to 2 tens and 3 ones. Then now if we change 1 10 to 10 ones, अगर हम 1 10 को 10 ones में चेंज करते हैं तो ये जो ऊपर वाला 1 10 है वो हमारा 3 ones में ऐड हो जाएगा और ये वाला जो 2 tens में से इस 1 tens को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे. When we subtract 2 tens 1 10 from 2 tens, then so we can say there is only 10 ones. 10 ones means 1 10. यानी 2 tens minus 1 10 is equal to 1 10 and 1 10 is equal to 10 ones plus 3 ones is equal to 13 ones. अगर हम 2 tens में से 1 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 10 और 3 ones में हम 1 10 means 10 ones. 10 ones को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 10 plus 3 is equal to 13 ones हो जाएगा. So we can say, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2 tens and 3 ones is equal to 2 tens and 3 ones is equal to 1 10 and 13 ones. वो कैसे हुआ? क्योंकि 2 में से हमने 1 10 को माइनस कर दिया तो 1 10 हो गया और जो 1 10 हमने माइनस करा था वो यहाँ पर आकर 1 10 is equal to 10 ones हो गए. 10 ones plus 3 ones is equal to 13 ones. इस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया कि 2 tens is and 3 ones is equal to 1 tens and 13 ones. मतलब 2 tens और 3 ones जो है वो हमारा 1 and 10 and 13 ones के बराबर है. And I hope you all are understand this. So we will start exercise number 3C. Practice exercise 3C. Question number 1. Fill in the blanks. Fill in the now start exercise 3C. Question number 1. Fill in the blanks. First is example. 3 tens and 2 ones. 3 and tens and 2 ones is equal to dash tens and now students, this is the example of the fill in the blanks. First is 3 tens and 2 ones. Now when we change this, then 3 tens minus 1 10 is equal to 2 tens. So 2 ones में हम क्या करेंगे 1 10 को प्लस कर देंगे. 1 10 means 10 ones. तो 1 10 means 10 ones. इधर हमने 1 10 को माइनस करा तो 3 minus 1 2 रह गया. अब जो 1 10 हमने माइनस करा वो यहाँ आकर हमारा 10 ones हो गया. तो 10 ones plus 2 ones is equal to 12 ones. ये हमारा आंसर हो गया. I hope you all are understand. Now sum number A. 1 10 and 0 ones is equal to dash tens and dash ones. Now look students, here it is 1 10. 1 10 means 10 ones and 0 ones means 0. So 1 10 means dash tens and 10 ones. तो 1 10 में से हमने 1 10 को माइनस कर दिया तो क्या रह गया यहाँ पर हमारा 0 tens. 1 tens minus 1 10 is equal to 0 और 1 10 जो है वही हमारा यहाँ पर आकर क्या बन गया 10 ones. So you all are understand. Now sum number B. 7 tens and 4 ones is equal to 6 tens and
in the place of ones. So 7 tens and 4 ones. So 7 tens minus 1 tens is equal to 6 tens. So 1 ten is equal to 10 ones. So here it is 4 ones. So 10 ones plus 4 ones is equal to 14 ones. Answer. Next, see 6 tens and 8 ones. Six tens and 8 ones is equal to 5 tens and dash ones. Now look here, 6 tens and 8 ones. So you subtract 1 ten from 6 tens. So 6 minus 1 ten is equal to 5 tens. So minus 1 ten, 1 ten means 10 ones. So 10 ones plus 8 ones is equal to डैश में हमारा आ जाएगा 18 ones आंसर. जिस 1 10 को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं वही 1 10 जो है हमारा वंस में प्लस हो रहा है 10 बन के, बिकॉज 1 10 is equal to 10 ones. Now last is 5 tens and 5 ones. 5 tens and 5 ones is equal to dash tens and 15 ones. Now look here, 5 tens and 5 ones. So 5 tens minus 1 tens is equal to 4 tens. 5 minus 1 is equal to 4 tens and 10 tens, 1 10 is equal to 10 ones. So 10 plus 5 is equal to 15 ones. E. 4 tens and 3 ones is equal to dash tens and 13 ones. Now here it is 4 tens and 3 ones. So 4 tens and 3 ones is equal to dash tens and 13 ones. अब हमारा 1 ब्लैक में 13 ones है, तो how many tens? 4 minus 1 is equal to 3 tens. 4 minus 1 is equal to 3 and 1 10 is equal to 10 ones. 10 ones plus 3 ones is equal to 13. Now this is all for now student, rest all is your homework from F to K. You have to do in the homework and जैसे बिल्कुल मैंने आपको क्लास ऑफ में करवाए हैं सेम उसी प्रोसेस से ही आप जो है होमवर्क में करेंगे और आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में. So sum number F, G, H, I, J, K is your homework. So student, this is all for today and thank you and have a nice day.